हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10th। आइए आपके पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की अगली दो स्टैंजास को कवर किया जाए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पोम की पहली दो स्टैंजास यानी कि पहले दो क्वार्ट्रेन्स को कवर किया था। क्वार्ट्रेन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। क्वार्ट्रेन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स and these 4 lines are actually in tetra and trimeter. Tetra means 4 meter or 4 feet. Tri means 3 meter of feet. तो पोम की जो पहली जो दो स्टैंजा हैं यानी कि दो क्वार्टरेन्स हैं उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टू just stanzas of the poem, means two just quatrains of the poem, and see what does actually the poet, that is Frederick Ogden Nash, an American poet born 19th August, remember 19th August 1902, died 19th May, just 19th May 1971. Now let's look at the next two stanzas of the poem, means next eight lines of the poem, and understand. Custard the dragon had big sharp teeth। कह रहा कस्टर्ड दी ड्रैगन, कस्टर्ड या ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था, इसके दांत बहुत ही शार्प थे। बिग शार्प टीथ यानी कि बड़े थे, और शार्प यानी बहुत तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा था उस पे जो है उभरे हुए नुकीले कील जैसे, जो उसके शरीर पे नुकीले कील जैसे उभरे हुए छोटे छोटी जो है पार्ट था एकदम कील जैसा। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो नीचे वाला यानी कि उसका जो बेली वाला हिस्सा था वो एक स्केल से ढका हुआ था। यानी कि जनरल जिस तरह एक फिश की बॉडी एक सिल्वर कलर के पतले से लेयर से ढकी होती है, actually that layer covers or protects the skin of the fish or the reptiles। ठीक उसी तरह इस ड्रैगन के भी लोअर बॉडी पार्ट पे स्केल्स था। माउथ लाइक फायरप्लेस, इसका जो मुंह था एकदम आग की भट्टी जैसा था। कह रहा है आग की भट्टी की, कह रहा सीधे से कह रहा किसकी तरह था। चिमनी फॉर नोज, और नाक जैसे कि चिमनी उस जो है उस स्ट्रक्चर जैसी जो धुआं को निकलने के लिए बनाया जाता उसकी तरह था। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज यानी कि जो पैरों के जो है उंगलियां थीं वो जो है किसके जैसी थी, या उसके जो नाखून आप कह सकते, उसके पैरों के जो नाखूनों, उसके पैरों की जो उंगलियों के जो नाखून थे वो किसके समान थे, डैगर्स यानी नाइव्स, चाकू के समान थे। तो आप देख सकते हैं माय डियर लर्नर्स दैट द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर पोम, to some extent, not to some extent, means to great extent, is dedicated to the physical description of this creature, that is a dragon, who has been given a name, that is what, Custard. The poet says that this very particular dragon had big sharp teeth. The mouth of this very particular dragon was just like a fireplace. Why? Because it is said that dragons were capable to actually release fire from their own mouth. That's why here just Ogden Nash just compares the mouth of the dragon to a fireplace, and the nose of the dragon just like the chimney that allow the smoke to
pass out, and the nails on the toes of this very particular dragon were sharp like daggers. Daggers, a kind of knife. तो ये पहली जो है, सॉरी थर्ड जो है पोम की स्टैंजा है my dear learners. Now let's look at the fourth stanza of the poem. Belinda was as brave as a barrel full of bears. My dear learners, B-E-A-R-S, इसको बेयर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते हैं बैर यानी भालू. तो कह रहा है, अब देखिए जो फोर्थ स्टैंजा है पोम का, वो एक्चुअली बताने जा रहा है कि ये जो क्रीचर्स थे, ये जो बीइंग्स थे, बेलिंडा, उसके एनिमल्स, उसके जो पेट, वो थे कैसे बाय नेचर. कह रहा है कि बेलिंडा किसके समान थी? ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बैर्स. एक बैर जैसी नहीं कह रहा पोएट, कह रहा है कि जैसे बेलिंडा उतनी ब्रेव थी, जैसे एक जो बैरल फुल ऑफ बैर्स होता है. बैरल इज अ काइंड ऑफ अ कंटेनर, अ ड्रम लाइक कंटेनर. तो कह रहा है जो बेलिंडा जो थी वो कितनी ब्रेव थी. कई जो है कह सकते हैं अब कई भालुओं के समान वो बहादुर थी, ब्रेव थी. सीधी हाइपरबले, कैसे हाइपरबले का यहाँ पे यूज किया जा रहा है? HYPERBOLE, दिस इज कॉल्ड हाइपरबले. तो कैसे यहाँ पे देखिए हाइपरबले का यूज कर रहा है पोएट कि बेलिंडा को वो कह रहा है कि वो उतनी बहादुर थी जैसे बहुत सारे एक झुंड होता है, आपसे कह सकते हैं कि झुंड जैसे होता है भालुओं के झुंड के समान ये बहादुर थी. एंड इंक एंड ब्लिंक, कह रहा है चेस्ड जस्ट लायंस डाउन दी स्टेयर्स. और ये जो इंक और ब्लिंक थे, इंक और ब्लिंक कौन रहते हैं डियर लर्नर्स? इंक और ब्लिंक कौन है? ये दो दूसरे जो क्रीचर्स हैं इस पोम में, जो किसके समान बहादुर हैं? किसके समान बहादुर है डियर लर्नर्स? जस्ट लाइक दी यू कैन से द लायन. बहादुर नहीं, उनको और ज़्यादा मीन्स दे आर ब्रेवर देन द लायंस, यानी कि वो लायन से भी ज़्यादा बहादुर हैं, जो किसको भगा देते हैं. यानी इंक का कौन है माय डियर लर्नर्स? एक्चुअली एक किटन है. और ब्लिंक कौन है? एक्चुअली एक जो है ये माउस है. तो इंक और ब्लिंक को कह रहा है कि वो इतने बहादुर हैं कि वो क्या करते हैं, वो शेर को भी भगा देते हैं या शेर का भी शिकार कर देते हैं. देखिए कैसे हाइपरबले का यूज कर रहा है पोएट. मस्टर्ड, और मस्टर्ड कौन है? दैट वेरी पर्टिकुलर येलो कलर डॉग कह रहा है. और मस्टर्ड वॉज as brave as a tiger in a race. और जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है, बहुत ही बहादुर, बहुत ही खतरनाक, ठीक उसी तरह ये मस्टर्ड, ये जो डॉग होता है. But Custard cried for a nice safe cage. लेकिन कह रहा है ये जो कस्टर्ड है ये तो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा डिमांड करता है कि काश उसके पास एक सेफ सा, सुरक्षित सा अपना एक क्या होता, एक पिंजरा होता जिसमें वो सुरक्षित रहता. तो जो फोर्थ स्टैंजा है माय डियर लर्नर्स, एक्चुअली वो किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट अबाउट द जस्ट फिजिकल फीचर और द मेंटल फीचर ऑफ these creatures or of these being mentioned in this very particular poem. First we have Belinda, a young girl, all right, who has 4 pets. The first, actually, a kitten, all right, named Ink. Then we have a mouse named Blink. Then a yellow colored dog. Since the dog is yellow in color, it is called Mustard. And last but not the least, we have dragon, that is called
custard. तो कह रहा है कि Belinda is as brave as a barrel, as a drum full of bears. Means, see how the poet is using hyperbole. Hyperbole एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए करते हैं. सो हाउ कैन अ गर्ल बी एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ bears? It's next to impossible. But even then the poet Ogden Nash only for what? Only for arousing laughter, only for actually giving humorous taste, or only for making the poem humorous, he makes this impossible kind of a comparison, or he gives this impossible kind of a description to these very particular beings of this poem. So he calls Belinda as brave as a group of bears. Then he says that they blink and ink means kitten and this very particular mouse, they are brave enough, strong enough, particularly to chase away a lion. It means they are capable enough in hunting down a lion. So you can understand how has he been actually exaggerating in order to describe the strength, the stamina, bravery of these so small creatures. So how ridiculous and how humorous the poem is. And then he says that mustard is so strong enough even to hunt down what? Even to hunt down a tiger. That if the mustard is brave like an angry tiger. Just like if a tiger is very angry, it becomes very lethal and very dangerous. In the same manner, this mustard becomes very lethal and dangerous, and has the power or the ability or the strength even to hunt down an angry tiger. That is next to impossible. So here the poet has described all these beings in a very humorous manner. Only for making the poem humorous, he has made this kind of impossible comparison, or he has given these impossible kind of traits and features to these creatures of his own poem. तो hope my dear learners ये poem की आपको 2 stanza और clear हो गई होंगी, provided that you find some complications in understanding. All right, feel free to let me know. तो आइए अब इसकी एक बार फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं. इस पोम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है, देखिए. Custard the dragon had big sharp teeth, fine, and spikes on the top of him and scales underneath. तो देखिए यहाँ पे देखिए and, और यहाँ पे देखिए and. सो repetition of the same word, यानी कि repetition यूज किया गया है. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. माउथ लाइक फायर प्लेस चिमनी फॉर नो. सो यहाँ देखिए repetition of vowel sound I in stress syllable means assonance. फायर में देखिए I, यहाँ लाइक में I को स्ट्रेस किया गया, फायर में I को स्ट्रेस किया गया, I के साउंड को
चिमनी में आई के साउंड को स्ट्रेस किया जा रहा है, यानी कि repetition of vowel sound in stressed syllable. So if there is a repetition of vowel sound in stressed syllable, that is what? Assonance. A-S-S-O-N-A-N-C-E. तो यहाँ देखिए एसोनेंस यूज हुआ है पोम में, क्योंकि बार बार ये जो आय है, आय का साउंड रिपीट हो रहा, और यहाँ ये जो आय सेलेबल है वो स्ट्रेस्ड हो रही है. नेक्स्ट, एंड रियलियो ट्रूलियो. और ये रियलियो ट्रूलियो, एक्चुअली माय डियर लर्नर्स, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक रियलियो trulio, but here the poet has deliberately misspelt two words, realio in a real word and truly word, as realio and trulio, again particularly to make the poem humorous. So यहाँ पे poet किसका यूज कर रहा है? Poetic license, that authority, that liberty poets are given particularly to tamper with the certain grammar rules. तो poets के पास ये authority होती है कि वो अपने certain जो है certain conditions या certain reasons के कारण वो ग्रामर के रूल को ट्विस्ट कर सकते हैं, वर्ड की स्पेलिंग को ट्विस्ट कर सकते हैं, और उसी अथॉरिटी का यहाँ पर, उसी फ्रीडम का, उसी प्रिविलेज का यहाँ पे ऑगडेन नैश यूज़ करते हुए जो है रियल वर्ड को रियलियो कर दे रहे हैं, ट्रूली वर्ड को जो क्या कर दे रहे हैं, देखिए ट्रूली वर्ड को कर दे रहे हैं, ट्रूलियो कर दे रहे हैं. तो इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग को वो डेलिबरेटली मिसस्पेल्ड कर रहे हैं, ओनली फॉर मेकिंग द पोम मोर ह्यूमरस एंड फॉर एंटरटेनिंग और डिलाइटिंग हिज रीडर्स मोर. तो यहाँ पे देखिए पोएटिक लाइसेंस का भी यूज़ किया गया. तो पोएटिक लाइसेंस यहाँ पे जो है इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पोएटिक लाइसेंस कैसे यूज़ कर रहा है पोएट. और एक चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे तो रियली, यहाँ पे भी थोड़ा देखिए, ट्रूली यहाँ पर भी देखिए, हिज में देखिए यहाँ पर भी आई का साउंड रिपीट कर रहा है, स्ट्रेस्ड हो रहा है. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेर. ऑफ पोम की जो फोर्थ स्टैंजा है, दिस इज अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबले एक्सेजरेशन. बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट कर रहा है कि बेलिंडा को कह दे रहा है वो किसके समान बहादुर है, एक जो है भालुओं के झुंड के समान, एक बैरल, एक ड्रम जो फुल ऑफ बैरल्स है, जितने वो बहादुर उतनी बेलिंडा. और इंक और ब्लिंक को कह दे रहा है कि वो तो लायंस को खदेड़ सकते हैं, भगा देते हैं, यानी कि दे आर ब्रेव, दे आर मॉब, they are braver than a lion. वो लायन से ज़्यादा. और देखिए दूसरा बात ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि LION को लायन पढ़ते हैं, लॉयन नहीं. ये ध्यान रखिएगा. एक वर्ड होता है LOIN, उससे हम पढ़ते हैं लॉयन. दैट इज द बॉडी पार्ट. द बॉडी पार्ट just close to the spinal cord, जो स्पाइनल कोड के जो आसपास का जो बॉडी एरिया होता है, that is actually called loin. तो LOIN, loin, this is the body part, and LION, lion, not loin. तो इंक और ब्लिंक यानी कि जो किटन है और जो माउस हैं वो लायन को भगा देते हैं, यानी कि दैट इज जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी कि हाइपरबले. फिर मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज. और गुस्से में जो एक मस्टर्ड है किसके समान रहता है, टाइगर के समान हो जाता, उतना ब्रेव.
but Custard cried for a nice safe place. तो my dear learners, पोम की जो फोर्थ स्टैंजा है उसकी जो 3 लाइन्स हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ hyperbole or exaggeration. Why? Because here the poet is exaggerating the things beyond limit or beyond reality. How can a how can a dog be as brave, as strong, as active, as powerful as a tiger? And it is almost next to impossible, particularly for a kitten. Yes, no doubt at all, kitten also hails from that cat family. Just lion just hails from. Even then, cat, can a kitten and you can say mouse stand anywhere in strength, power in comparison with a lion? No. So next to impossible. And then Belinda is compared to a barrel full of bear. That is also next to impossible. And the poet just does all that only and only to make his poem humorous. And why does he make his poem humorous? His intention is only to give a very good, healthy, actually laughter to his own readers. He wants to make his readers just laugh a lot, you say that. But see the last line. How does the speaker of the poem or the poet of the poem actually describe this very particular dragon? That is, you can say this 10 times stronger, bigger, massive in strength, power, and in everything in comparison with the rest 3 animals. But this animal all the time, or this creature, as per the speaker of the poem, has been complaining or has been just desiring particularly for a safe cage for itself, where it could feel itself absolutely safe and protected. It means somehow this creature does not feel safe outside or in the open house, just like these small creatures feel absolutely safe and secure. So यहाँ पे poet ये भी कहना चाहता है, yes, the size of the body does not matter. The strength of the body does not matter. Morale matters. Confidence matters. Positivity matters. So though kitten, dog, you see this mouse, they are very small, but they have bravery in them. They have morale. Their morale is very high. But though the body of this creature dragon huge, massive, but it does not have that kind of approach of thinking, approach of doing, and perception. And that's why all the time this dragon feels insecure and desires particularly for a safe cage where it could feel absolutely safe and protected. So that's it, my dear learners, in this video. In the next video we shall cover the next 2-3 more stanzas of this poem. Till then, bye-bye.